हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के मोहन सर से व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रीहीटर साइक्लोन जैमिंग। प्रीहीटर साइक्लोन की जैमिंग क्यों होती है? अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो डॉक्टर मोहन सर बताएंगे। कभी कभी मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीहीटर का डिप ट्यूब फॉल होके बॉटम साइक्लोन जाम कर देता है। कभी कभी डबल फ्लैप वाल्व में सिंगल फ्लैप वाल्व के फ्लैग टूट के बॉटम साइक्लोन में फंस जाते हैं, तो वहां भी चांसेस होते हैं साइक्लोन जैमिंग का। और कभी कभी तो प्रीहीटर का रिफ्रैक्टरी, जो साइक्लोन का रूफ है उसका रिफ्रैक्टरी फॉल होके गिर गया, तब भी साइक्लोन का जैमिंग हो जाता है। लेकिन सबसे अहम होता है कि जो रॉ मिक्स डिजाइन होता है, जो उसमें इंग्रेडिएंट हैं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आज हम डॉक्टर के मोहन सर से बात करेंगे। दोस्त, आपको भी पता है अगर साइक्लोन जैमिंग होती है, मटेरियल को रिलीज करना कितना क्रिटिकल काम हो जाता है। सबसे ज्यादा हजार्ड्स एक्टिविटी होती है प्रीहीटर साइक्लोन क्लीनिंग के दौरान। बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जो एयर पाइप है उसी में ही वाटर की क्वांटिटी को मिक्स कर लेते हैं टॉप पोर्शन में और सडन एयर रिलीज करते हैं वाटर के साथ में। तो जहां ब्लॉकेज होता है पिन पॉइंट पे एसएस के पाइप से वहां पर वाटर ब्लास्ट करते हैं तो ब्लॉकेज रिलीज होता है। कहीं कहीं CO2 की ब्लास्टिंग की जाती है, कॉडॉक्स सिस्टम लगे रहते हैं, तो उसके द्वारा भी जो मटेरियल है उसको रिलीज किया जाता है। लेकिन कई सारे प्लांटों में दोस्त हल्का सा भी निग्लिजेंसी हुआ तो बहुत बड़ा फैटल एक्सीडेंट भी होता है, और फैटल एक्सीडेंट हुए भी हैं। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर साइक्लोन का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, मटेरियल बिल्डअप ना हो, तो इसके लिए आज हम टोटल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The causes of cyclone jamming may be due to number one, incomplete combustion of coal. That is, coal is not completely burned in the kiln itself. Then you get this problem of cyclone jamming. Second is, if your temperature at the kiln inlet or in the upper part of the preheater is higher, then also you encounter problem of cyclone jamming. Moreover, sometime you have mismatching of kiln inlet temperature and the Precalciner outlet temperature. That also results into cyclone jamming. Then you may have increased recirculation of fine particles at the bottom stage cyclones of the preheater. And finally, and the most important aspect is internal circulation of volatiles such as sulfur, chlorides, and alkalis present in raw materials, fuel, AFR, if you are using the AFR. In addition, sometimes you may have problem of cyclone jamming because of insufficient suction due to low RPM in preheater fan, or flap valve failure and blockage in material pipe, or maybe due to refractory failure. Now coming to the causes because of the chemistry point of view. So now we will discuss from chemistry point of view how cyclone jamming takes place. What happens that the raw materials as well as fuel and AFR fed to the kiln have volatiles such as alkalis, that is Na₂O and K₂O, chlorides and sulfur S0₃. The volatiles evaporate when exposed to high temperature in the burning zone and then subsequently condense on the incoming raw material or kiln feed or on the surfaces in the colder parts of the kiln system. So by repetitive evaporation and condensation, these volatiles circulate at different temperatures and locations of the kiln preheater system. When they are present in high concentration, they cause material coating or cyclone jamming. So here the point is to be noted is that these components should be present in high concentration. Only then you encounter the problem of cyclone jamming. As we discussed earlier also, that because of this, you also get the problem of ring formation in the kiln system.
Now let us try to understand what is the reaction affinity between volatiles. The volatiles have a strong affinity for other elements, and they form chemical species like chlorides and sulfates. And now see what is the order of the affinity which has been observed, say, between these volatiles. So first what happens? The chlorine reacts primarily with the alkalis, forming KCl and NaCl, that is potassium chloride and sodium chloride. Then if you are still left with the residual chlorine, then it combines with calcium, thereby forming calcium chloride. However, it is seldom noticed that the input of chlorine is higher than the input of alkalis. Now the excess alkalis, because whatever alkali is there, it is first reacted with chloride and it has given you sodium chloride and potassium chloride. But still you are left with some alkali, excess alkali. So that excess alkali react with sulfur and forms compound potassium sulfate, that is K₂So₄, and sodium sulfate, that is Na₂So₄. Still, if we are left with residual alkalis, then they combine with CO2 and they form potassium carbonate, K₂So₃, and sodium carbonate, that is Na₂CO₃. The excess sulfur present as SO3 will react with lime, that is CO, and it will form calcium sulfate. So this is the reaction affinity between volatiles. So this is very important to understand the affinity between volatiles to understand the phenomena of cyclone jamming. Now let us examine what are the factors for recirculating behavior of volatiles. So two most important factors for recirculating behavior of volatiles are: number one, melting point of volatiles, and number two, temperature dependence of vapor pressure of volatiles. So two things I have discussed: melting point, and then the next aspect is your temperature dependency. So now let us see temperature dependency, melting point, volatiles. So melting points of some of the important volatiles are, like say sodium chloride. It melts at 801 degrees centigrade. Potassium chloride, it melts at 776 degrees centigrade. Sodium sulfate, it melts at 884 degrees centigrade. Potassium sulfate, it melts at 1074 degrees. Calcium sulfate, it melts at 1450 degrees centigrade, very high. Then potassium carbonate, it melts at 897 degrees centigrade. Whereas sodium carbonate, it melts at 854 degrees. So it is very important to know the melting points of the volatile, because that will help you to understand the causes of cyclone jamming. And second aspect that I have talked about is the temperature dependence of vapor pressure of volatile. So what happens that the vapor pressure of alkali chlorides, that is sodium chloride and potassium chloride, they are higher than the vapor pressure of alkali sulfate, that is sodium sulfate and potassium sulfate, at burning zone temperature of 1450 degrees centigrade. The vapor pressure of alkali chlorides, that is sodium chloride and potassium chloride, they take on the ambient pressure of 760 mm mercury at burning temperature of 1450 degrees. So what happens? Because of this, alkali chlorides are virtually fully, completely vaporized at the burning zone. As the melting point of alkali chloride is, as I have already mentioned, around 800 degrees centigrade, there is constantly increasing recirculating system form between the burning zone and the preheating zone. On the other hand, alkali sulfates, as opposed to alkali chloride, are only partially vaporized in the burning zone. Why? Because of their lower vapor pressure, and so they don't build up so severely in the kiln system. So this is what I just wanted to talk about, the cyclone jamming. If you have any question, you can ask me. तो सर इसमें हमारे दो क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू अवॉइड साइक्लोन जामिंग. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जैसा कि हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया
कि क्या क्या कॉजेज हैं साइक्लिन जामिंग के, एक जनरलाइज हमने एक कॉज बताया, और बहुत डिटेल में, चूंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री की होनी चाहिए इसको समझने के लिए कि केमिस्ट्री एंगल से साइक्लोन जामिंग कैसे होता है, तो उसको हमने बहुत विस्तार से आपको समझाया है कि किस तरह से साइक्लोन जामिंग होता है। अब चूंकि आप यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन that what remedial measures we have to, so I will tell you few measures that you have to take. Number one, you have to monitor the hot mill. So what thing you have to do in the hot mill, that SO3 and chloride contents in the hot mill can be used to evaluate the risk of cyclone jamming in the kiln system. Number one. And it has been found that some scientists very recently, this is the data I'm discussing with you, is that very recently, I think 2011, 10-11, one scientist, he has come up, after studying about 140 or so industrial clinker, where buildup formation has taken place, he has come up with the solution that if you maintain in the hot mill SO3 level below 6%, and chloride level below 3.5%, both on loss-free basis, that is ignited basis. So your content of SO3 in hot mill on ignited basis should be less than 6%, and chloride ignited basis should be 3.5% in the hot mill. Then your tendency of cyclone jamming is very much minimized. Second thing, that you have to monitor alkali sulfur ratio, that we have already discussed in ring formation also, that alkali sulfur ratio is very much important. So you have to check the alkali sulfur ratio of the total inputs. What are total inputs? Total inputs mean you have raw material, you have fuel, and if you are using AFR, then AFR also. So you have to see what is the alkali to sulfur ratio in the total input, that is raw material, fuel, and AF. And as we discussed earlier also in ring formation, that alkali sulfur ratio should be in the range 0.8 to 1.2%, preferably 1, that is unity, if you want to avoid this formation of air. So these two aspects you have to take care of. If you are able to take care of the hot mill SO3 and chloride, and secondly alkali sulfur ratio, then that will also help you in avoiding this formation. सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे जो रामिक्स डिजाइन हुआ है, अगर रामिक्स डिजाइन में ही अल्कलीज की मात्रा बढ़ जाती है, क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है या सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा हमारे किल्न ऑपरेशन में, या जब क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है अगर इन तीनों की वैल्यू बढ़ती है तो? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये ऐसा है कि ये प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि प्लांट में कई बार अल्कली बढ़ जाता है, कई बार SO3 बढ़ जाता है, कई बार क्लोराइड बढ़ जाता है। तो इसका क्या, अब समझने का आपने सवाल पूछा कि इसका क्या इंपैक्ट होता है किल्न ऑपरेशन पर और क्लिंकर क्वालिटी पर, इसको हम एक एक करके आपको बताते हैं। इफ द अल्कलीज आर वेरी हाई एंड नॉट बैलेंस्ड बाय सल्फर, it will be very difficult for them to exit. They will therefore continue to recirculate within the kiln preheater system and increase the probability of kiln ring and cyclone jamming. And clinker quality will also suffer because free alkali can enter into solid solution with the clinker mineral, thereby affecting the reactivity. So once these alkalis, these free alkalis, when they enter into clinker minerals like C3A, C2A, C3, and C4A, then they modified the behavior of these minerals. They affect the reactivity, and therefore they are impacting the clinker quality. Now, if sulfur is very high and not balanced by alkalis, it will continue to recirculate within the kiln preheater system and increase the probability of cyclone jamming. And excess hot mill, excess sulfur in hot mill can also form sulfosporite. That is C2. It is double salt of C2S and
CaSo₄, C2S dash CaSo₄ in the middle cyclones, which forms exceedingly hard and dense buildup, which will take a very long time. And clinker quality will also suffer because sulfur, which is not combined with alkali, will form a solid solution with the silicate materials, particularly C2S, that is up to 2%. And when this sulfur is incorporated in C2S, it stabilizes C2S and it inhibits the reaction between lime, that is CO, and C2S to form C3S. And as we know that if your C3S content is low, then your clinker quality is poor. Therefore, the C3S content gets decreased in clinker quality and thereby reducing the strength, cement strength. Now, the last point that you have asked is what happens if chloride is very high. If chloride is very high, it will combine with all the alkalis present, forming alkali chlorides, which will recirculate in the kiln and increase the probability of cyclone jamming and builds up in the preheater. Any remaining chloride will then combine with lime to form calcium chloride. And as you know, that calcium chloride has a very low melting point, that is 770 to 780 degrees centigrade. So this will make the hot mill extremely sticky at this temperature and increase the chances of build up higher up in the. And chloride will also form, normally it has been seen that it forms eutectic mixture with sulfates of potassium, sodium, calcium, and magnesium. And these eutectic mixture have melting point much lower than the melting point of pure compounds. Therefore, further increasing the likelihood of cyclone jamming. And normally, chloride beyond 0.015% in the raw mill is so bad that your cyclone jamming is inevitable. Thank you. इसमें मेरा एक पॉइंट था कि कभी-कभी क्या होता है कि मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्लोराइड की वैल्यू बढ़ गई, अल्कलीज की वैल्यू बढ़ गई या सल्फर की वैल्यू बढ़ती है, तो कभी-कभी जो डिप ट्यूब होता है साइक्लोन का, उसमें भी वेरिएशन आने लगते हैं, उसमें भी कोटिंग जम जाती है, उसका वियर एंड टियर भी बढ़ता है। तो ऐसा सर, ऐसा कौन सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको अवॉइड करने से उसकी लाइफ हमको मिलेगी ज्यादा डिप ट्यूब की? हाँ, जैसा हमने कहा कि आपको ये अल्कली सल्फर रेशियो बैलेंस कर, सारा खेल जो है ये अल्कली सल्फर रेशियो का है। अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, फर्ज करिए कि आपका अल्कली, मान लिया अल्कली सल्फर रेशियो आपका 0.8 है या उससे कम माने आ गया, इसका मतलब क्या है कि अल्कली की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कुछ अल्कली कंपोनेंट डाला जाए। आप जैसे अल्कली कंपोनेंट में आप फेल्डस्पार डाल दीजिए, ठीक है, तो वो अल्कली सल्फर रेशियो बैलेंस हो गया, नंबर 1, ठीक है। अगर अल्कली सल्फर रेशियो आपका क्या है, आपका अल्कली सल्फर रेशियो 1.2 से ज्यादा चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अल्कली ज्यादा है, सल्फर की कमी है, आप रॉमिक्स में जिप्सम मिला दीजिए, सल्फर वहां से आ जाएगा, तो अल्कली सल्फर रेशियो बैलेंस हो गया। तो सारा खेल ये है अल्कली सल्फर रेशियो बैलेंसिंग का, चाहे वो रिंग फॉर्मेशन हो, चाहे साइक्लोन जामिंग हो, चाहे किसी तरह के बिल्डअप हो। हम हमेशा इस व्यू के रहे हैं कि आपने अगर अल्कली सल्फर रेशियो बैलेंस कर दिया तो बाकी जितने भी कॉजेज हैं उसको आप तो प्रोसेस वगैरह से किसी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको नहीं कंट्रोल किया, अल्कली सल्फर रेशियो को 0.8 से 1.2 के बीच में नहीं रखा है, तो ये आपको परेशानी देगा, हर जगह परेशानी। तो इसका सबसे सोल्यूशन अच्छा है कि आप अल्कली सल्फर रेशियो को बैलेंस करिए, और वो तरीका हमने बता दिया। लो अगर अल्कली सल्फर रेशियो है तो क्या करना है, अगर हाई सल्फर रेशियो हो जाता है तो उसको क्या करना है। और सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हमारे दिमाग में आया है कि क्लोराइड को बाईपास करके निकाला जाता है किलन इनलेट से, तो ऐसा क्या रीजन है सर, वहां से ऑटोमेटिक क्लोराइड बाईपास होके बैग हाउस लगा रहता है, बैग हाउस में चला जाता है, तो ऐसा कैसे वो ऑटोमेटिक डिटैच हो जाता है क्लोराइड ऑटोमेटिक? वो तो ऐसा कुछ रीजन जरूर होगा सॉलिड कि हम इनलेट से। देखिए ना, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये सब वेपराइज हो रहा है, ठीक है सर, जब वेपराइज हो गया
तो वेपर में तो आपका कोशिश क्या है कि जो एक्चुअली ये सब गैसेज में है सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट ऑफ, जैसे बहुत से प्लांट में लोगों ने क्लोराइड बाईपास लगाया, ठीक है, स्पेशली कोस्टल रीजन में जो प्लांट हैं उसमें क्लोराइड बाईपास प्लांट सिस्टम लगाए हुए हैं। तो उसमें जो गैसेज में जो क्लोराइड है उसका आप कुछ परसेंटेज क्या है बाईपास के थ्रू निकाल देते, क्योंकि भाई गैस में ये हो गया, क्लोराइड है उसमें वेपराइज हो गया, जैसे आपको बताया था रिसर्कुलेट हो रहा है। तो उसमें आपने मान लिया, आपने लगा दिया कि भाई हमारा बाईपास सिस्टम है जो 25% तक है, लगाया, तो क्लोराइड उसके थ्रू पास ऑन हो गया बाईपास के। तो आपका क्लोराइड कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया, जो सिस्टम में आ रहा है। यही रीजन है क्लोराइड बाईपास लगाने का। नहीं तो क्या हो रहा है कि अगर आपने क्लोराइड बाईपास नहीं लगाया है तो आप क्या है हो रहा है कि आप उसको वो रिसर्कुलेट होते जा रहा है। जैसे हमने दो फिनोमेना बता दिया आपको कि एक तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा वेपर प्रेशर जो है। इन दो की वजह से जो है परेशानी आ रही है पूरे किल्न प्रीहीटर सिस्टम में। तो आपने क्या किया कि क्लोराइड को कुछ निकाल दिया सिस्टम से, तो बच्चे जो क्लोराइड हैं वो आपको ज्यादा तकलीफ, इसलिए लोग प्लांट में लगा देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि क्या क्या चीज प्रिकॉशन के रूप में रखने हैं कि प्रीहीटर का साइक्लोन जाम ना होने पाए। दोस्त, अगर आपके पास में और भी सारे कमेंट्स हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ही टाइम मिलेगा हम उस पर डिस्कस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।